Hello, everyone. It's my great pleasure to welcome Dr. Ishika Dev, who has passed her January 2023 FMG examination in very first attempt with very high score of 221. She was with us on online live batch and she has passed her graduation from Uzhhorod National Medical University. So Dr. Ishika, many congratulations from entire Miss team to you and Thank your you so much, family. ma'am. Thank you. So what was your reaction to the result, and were you expecting such a high score in the exam? Actually, ma'am, no, I was quite surprised. I actually double checked my result. Like I was very surprised like I scored so much. Okay. But you were very sure that definitely you will clear the I'll pass. I knew that I'll pass, but I did not expect such high marks. That's all. such high scores. Okay. So if you want to just share the secret of your success in this exam, so what you will say? There is no thing as secret. I just took one day at a time and told what the faculty told us to do. Like we used to revise everything after the class and just not think about the future and worry about it, like how will we complete our syllabus on time, how many times will we revise. It was nothing like that. I just took one day at a time. That's all. Okay. So that's a very important message from Dr. Ishika, that we should not be wasting our time in thinking about the future, what will happen. So, what is at the present moment the time with us? We have to utilize to its maximum to get the maximum output. Okay, so whatever the task is given to you on that particular day, you have to just do with the full concentration, with full focus. And definitely, if you are going to do a small steps, then you will be making a big jump in the exam. So, Ishika, I just want to know one thing, that during this journey, if you want to share some special moments you had experienced with us, it could be a very high moments also, it can be a very low moment also, and how you had overcome those phases. Ma'am, to be completely honest, during the starting of this journey, like we had to sit for around 6 hours, 7 hours, 8 hours, and it was very difficult for the first week because we don't have that much habit of sitting continuously and concentrating in the screens and whatnot. So it was quite difficult for 1 week, and after that, gradually, like it got better. And then when we first took our first subject test ever, when I got good marks, I was like, okay, this might not be that difficult. And then I took it like gradually, like we can do this, we can do that. And ma'am, even the teachers also gradually increased the time. It was not like that from the starting. It was 10 hours first, it was 4 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours. So it was easy getting into the habit. Yeah, definitely. It is a very important strategy what we follow, that we want our students to acclimatize the situation. Yeah. So initially for a week, we keep around 4 to 5 hours. Yeah. On the first day, we keep around 3 hours, then it is increasing up to 4 to 5 hours. Then second week, we move up to 6 hours. And then finally, we are coming after a month to a 10 to 12 hours single stretch. And I can say many of the students, sometimes they message us in the beginning, oh, we are having such a short class, we should be having 10 to 12 hours class from the day one, so we'll be finishing our syllabus quite early. So they are not able to understand this point, that why we had scheduled like this, that is small our classes in the beginning, to get ourselves acclimatized to the situation, because we are not in a habit of sitting for such a long. Not only sitting, you can sit, no problem, but when you have to watch on your screen of a small mobile or an iPad for a very long time, it is causing a strain in eyes also, so it is very difficult to focus. And here you have to do two three things: you have to watch on mobile, you have to listen also, and you have to write also. So these three things you have to, and you have to understand in between also, and you have to ask the queries. So many things you are doing, so that requires a very much attention, and that requires time to get adjusted to this situation. So this is a very important a point we should be able to understand. Now ये इस जर्नी में इशिका, कभी आपको लगा कि मैंने ऑनलाइन लिया तो I got some advantage of this online course, or if I would have joined the offline, I should getting something better or something less? So if you want to compare this online offline platform, what you can see the plus points of both and minus points for both? Ma'am, actually, I preferred online because it saves a lot of time. You can eat and you can watch the video and classes at the same time, and you don't have to go anywhere. So there is no fatigue as such.
like of traveling, but obviously there is fatigue if you have to sit for 10 hours straight. But it was not as tiring, I hope, because I have friends who joined the offline classes and they said we have to get up 2 hours early and we have to travel to the center. I was like, at least I get to sleep 2 hours more than you. It was Definitely, better. definitely. So I can say definitely there are some plus points with the online, that you are at home only, you are getting a 5-10 minutes to get ready, and even if you are not ready, if you are just sitting in front Yeah. of the mobile in your casuals, also nobody is going to see you. But for the offline, and especially in the offline, if you want to see a desired seat on a first row, second Yeah. row, so we see that students are coming 1.5 hour before, and they're putting their bag and then going for their breakfast and lunch. So they want to occupy. So definitely it is going to take some extra time, which you either you can relax or you can use in your revision purpose. But one major disadvantage is that we don't get to interact with our teachers, and if you have any doubt, it becomes difficult, because even as teachers, you must have received so many doubts at one time, and it might be difficult for you to clear the doubt at the same time. So it's difficult sometimes. This is a I can say a negative point, that face to face interaction is not there, so we can ask the cannot ask the queries at that particular moment also. But yes, we are giving you the platform to ask the questions, and we reply your queries also. Okay, but I think the plus points are more with the More better, yes, than yeah. the online, so that's why you had gone or you accepted the online syllabus. Now one very important query students they have, that ma'am, while we are studying, sometimes after a month or two, we get so much of frustrated, upset. And as the exam is coming closer, then it is giving us palpitation. हमको ऐसा लगता है कि हम पुराना सब भूलते जा रहे हैं, सब कुछ भी याद नहीं है. तो क्या आपको इस जर्नी में कभी आपको भी कुछ कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपने लो फील किया, एंड अगर आया तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? मैम एक्चुअली ये हुआ, एक्चुअली मतलब जस्ट बिफोर द एग्जाम, लाइक 2 to 3 days बिफोर एग्जाम, आई वाज पैनिकिंग कि कुछ याद नहीं है, कैसे आएगा या क्या आएगा. हाँ, बट देन राजीव सर, एज ही यूज्ड टू से, लाइक बिलीव इन योरसेल्फ, कि जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं. तो बिल्कुल, बिल्कुल. and I just listened to you, matlab, even in your live YouTube channel, we saw you making timetables for the last 10 days, 30 days. So we used to follow that also. कि अगर खुद से नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये फॉलो करके देखते हैं. ओके, ओके. सो आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाते थे? व्हाट टाइम टेबल वी यूज्ड टू गिव यू, यू वर फॉलोइंग दैट टाइम टेबल? मॉडिफाई जरूर किया होगा, बट ऐसे अपना ओरिजिनल कुछ ऐसा नहीं. ओरिजिनल नहीं बनाया, तो जिससे एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है आपको कि भाई आपको किस तरह से करना है. एंड दिस टाइम टेबल इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन इन सच अ वे दैट यू आर एटलीस्ट डूइंग 4-5 revisions very easily during the syllabus, or throughout the 6 months journey. And how would you like the concept what we are having here, the weekly test, the subject test, then mock test? So how would you like this concept? Should I it be think only one sentence would justify that. During the exam, I felt like I was solving one of the missed papers. That's all. okay? That's a very That's all. It was that's a like, very good compliment for all of us, because we are making the paper with so much of efforts, yeah. because trying to read the mind of students, that what type the questions can be asked in the examination, and what our students are thinking and how they should approach for that particular question. So I think मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आपने इतने सारे जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट, वीकली टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट दे दिए थे कि आपका फोबिया खत्म हो गया था, और वहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ये एक मॉक टेस्ट ही अपीयर कर. मैम, एंड लाइक जिस तरह का लैंग्वेज था क्वेश्चन पेपर में, इट वाज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मिस्ट, सो इट वाज नॉट स्कैरी एट ऑल कि कहाँ से आ गया या कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं था. ओके, मतलब ये है कि जो हमारे मॉक टेस्ट है और उनका जो स्टैंडर्ड था, इट इज ऑलमोस्ट द सेम व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो आपको एक लगा ही नहीं कि कोई आप कोई दूसरे एग्जाम में कोई मतलब एक एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, कि जैसे कैजुअल एक मॉक टेस्ट देते हैं. आई थिंक इस बार तो वी वर वेरी लकी कि एग्जाम पोस्टपोन होने के कारण इंस्टेड ऑफ 3 मॉक टेस्ट वी वर हैविंग 6 मॉक टेस्ट, and double time of a subject revision, subject wise test भी पूरे double हो गए थे. So that was a very good advantage कि I think around 4,000-5,000 questions तो आपको वैसे ही practice session के लिए मिल गए थे. So medical में और कहाँ से पूछेंगे जब एग्जैक्टली. सिलेबस तो वही घूम फिर के है. तो आपने अगर more than 5,000 questions कर लिए हैं,
तो उसी में से ही घूम फिर के आने हैं Ma'am, सारे। there were so many questions which were from direct from our notes. Like it Okay. was like one-liners mostly were from our notes, and the images also we have practiced. So it was not nothing new. I would say. But हाँ there were some questions which we could not solve. Obviously, who can like we अच्छा, cannot do anything about that. हाँ, तो 20% क्वेश्चन तो वी से इट्स लाइक अ फ्लोटस। Yeah. आप उसको देखो और बस जो प्यारा लगे या चॉइस आपको, यू जस्ट क्लिक एंड मूव फर्दर। लेकिन हाँ, रिमेनिंग 80% ऑफ द क्वेश्चंस वी शुड बी हैविंग प्रॉपर ग्रिप ऑन दैट। एंड यस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो सेइंग कि फर्स्ट पेपर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस्ट की नोट से Yes, ma'am, absolutely. First paper was very easy as compared to the second one. ऑल इन वन का ही ऐसा लग रहा था कि पूरा Yeah. प्रिंट आउट वहीं पे सामने रखा हुआ है। ओके, ग्रेट। So, what you would like to suggest to your juniors that, or what you like to share your secrets of success with your students, with your juniors, so they should also be clearing the next upcoming June examination? I think they should start preparing from their last semester, I guess. At least not 7 to 8 hours a day, but they should at least familiarize themselves with the subjects so that they don't feel anything new 6 months before the exam and they don't panic. Because I started preparing from December or January 2022 or 2021. So it was not, I had completed one or two subjects very, you know, like summary wise, and after that I felt I was just revising, because when you taught us subjects like PSM, it was very difficult to understand because it is a very vast subject, but it was done very beautifully, ma'am. And it was new also, no? Because Yeah. matlab, this subject by this name is not in your medical curriculum in the foreign universities. Yes. Although the sections of this were being Yes. taught, but not as a this subject. So this subject is absolutely new. New. And if we talk about the national program, so 50% of the content, what I always say, is absolutely new in this subject. So that was again a very difficult task for you people also, that you have to start from scratch. And for me also, that I have to teach in such a way that like I am teaching you the ABCD of the subject, and Yes. then I go with the words, and then I have to make the sentences like that. So I have to move further also. So another very important message from Ishita's side, ki you have to start from your medical university duration only. I can't say ki you have to just start for 10 to last from the first year or first semester only. But yes, when you are in your 7th, 8th semester or in a 4th year final year, you should be serious, and you should be trying to clarify the concept of the subject, basic concepts. So when you are coming to India and then you are reading, so at least your basic concepts are clear. So it will be easy for you to revise. That's a very, very important message to all our junior aspirants who are going to appear in upcoming June 2023 examination. Beta, आप घर पे हैं? Your Yes, parents ma'am. are with you. Yes, So ma'am. Yes, I wish that if they can come here, so I want to congratulate them also. They can call them. नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके सब घर प्यार के सब लोगों को। बिटिया ने इतना अच्छा आप सब एग्जाम में रिजल्ट लिया है, सबका नाम रोशन किया है। ऐसी बिटिया मैम, आप लोगों को भी, आप लोगों की ही वजह से इतना ये कर पाई। हाँ, नहीं, ऐसी बिटिया भगवान सबको दे। और आप भी कुछ हमें शेयर करिए कि आपने कैसे इसकी केयर करी, कैसे क्या इसके साथ में किया, और पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई एम लकी, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अच्छा, खुद ही सब कर लेती थी। बट हाँ, जब वो पैंडेमिक और वॉर के समय सिचुएशन थोड़ी बहुत टेंस्ड हो गई थी, तो उस वक्त हम लोग बहुत टेंस्ड हो गए थे कि आने का जितना था वो तो था ही था, बट आगे का क्या फ्यूचर होगा, इनका क्या पढ़ाई कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा हम लोग बहुत ही टेंशन में थे। बट सब स्मूथली होता गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, तो कौन सी ईयर में थे बेटा जब आप वहां से आए थे? लास्ट ईयर फाइनल ईयर में थे। लास्ट फेब में। ओके, लास्ट फेब में आए, फाइनल ईयर में थे। तो फिर फाइनल ईयर के एग्जाम्स आपने ऑनलाइन ही दिए थे फिर? ऑनलाइन दिए थे। ओके ओके, तो सेम यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करे थे या फिर सेम यूनिवर्सिटी ने करे थे? ओके, डेफिनेटली ये तो एक सिचुएशन थी कि भाई आगे क्या होगा, कि 4 साल अपने निकल गए हैं, अब फिर फाइनल ईयर कहाँ से कैसे हो पाएगा। तो एक मन में बहुत बड़ा डर तो था ही। पहला डर तो ये था कि भाई बिटिया सही सलामत आ जाए अपनी से। वो तो था ही था, साथ में उनका 5 इयर्स जो उनके गए, वो उनका कैसे क्या हो, बिल्कुल, कहीं वो वेस्ट तो नहीं है जाए। एक मन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे कैसे होगा, वही फिर आगे फर्दर वो लोग कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे,
ये भी था प्रॉब्लम, बट उन्होंने किया। और हाँ, चांस की बात थी कि ये जहाँ पे थी वो थोड़ा सेफेस्ट जगह पे था, तो इनका ज्यादा कुछ हुआ नहीं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आराम से निकल आया। सो आप और पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों की आपकी इशिता की तरह से ही कैसे केयर करें कि उनके बच्चे भी ऐसे ही अच्छे आगे परफॉर्म करके निकलें? हाँ, सबसे पहली बात कि उनको प्रेशराइज ना करें पढ़ने के लिए। जब ओके। उनको दिल करे, जब वो अपने अपने कंफर्ट के अनुसार पढ़ें। ये नहीं कि अब कुछ पेरेंट्स होते हैं सुबह उठते ही पढ़ो 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 पढ़ो, दिन भर पीछे पड़े रहते हैं। तो बिल्कुल वो अपना उन पे छोड़ देना चाहिए, जब आपको लगे आप पढ़ो उस वक्त, क्योंकि प्रेशराइज करने से क्या है, फिर वो बैठेंगे तो बट उनका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो कोई यूज नहीं है उसका बताने का फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही, मुझे भी अच्छे से याद है कि मेरा भी एक बेटा है और जब कई बार जो है वो ऐसा लगता था कि काफी पूरे दिन उसने वेस्ट कर लिया, तो हम उसको कहते रहते थे, बेटा आप क्या है पूरा दिन वेस्ट कर लिया, पढ़ लो पढ़ लो। तो वो अगर उसको इतना बोलते थे ना तो वो इरिटेट हो जाता था। हाँ, वही वही। वो कहता था आपने मम्मा मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। तो हाँ, वही वही। आप इरिटेट करते रहते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन अगर अब हम रिट्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो अब तो हमें लगता है कि हमने क्यों कहते थे, लेकिन उस समय बीइंग ए मदर, बीइंग अ हाँ, पेरेंट, आप रह नहीं पाते हो, आपको लगता है कि बेटा अभी समझ नहीं पा रहा है उस चीज को, तो आप फिर उसको। ये लोग भी कहते हैं आप रिजल्ट देखो ना, आप ये मत देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, तुम लोग को हाँ, जो ठीक लगे वैसे ही करो, क्योंकि ये खुद भी, अब ये लोग इतने मेच्योर भी हैं कि अपना खुद का इनको पता है हमें कब पढ़ना है कब क्या करना है। हमने कहा ठीक है, बस लेकिन बस एज ए पढ़ना। पेरेंट्स मन में थोड़ा सा डर तो रहता ही है ना, कि भाई ये लगता है अरे ये तो अभी यंगस्टर्स हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है, अभी ये हाँ। मेच्योर नहीं है, अभी ये वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो ये रहता ही है डेफिनेटली। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं और दे नो कि भाई उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है वो अच्छे से फोकस करके अपना काम कर लेते हैं। सो एंड में शिदा, आप अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम कि बस पहले से पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही एटलीस्ट, और रिवीजन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिवीजन इज द की बिफोर द एग्जाम। क्योंकि अगर एक बार सब आंखों के सामने से अगर चला जाता है तो वो एज अ पीपीटी घूमता है आपके दिमाग में ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल कि वो विजुअल मेमोरी रहती है कि यहाँ ये पढ़ा था यहाँ पे, सो इट्स वेरी यूजफुल। Okay, so a very, very important take-home message from Dr. Ishida कि you have to do as much as revision as you can, and last time में quick fast revision पे focus करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको जो है वो जब कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है तो इट लुक्स लाइक ओके आईज हैज सीन सम दिस थिंग समथिंग समवेयर एंड ब्रेन नो समथिंग अबाउट दिस, और वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे याद आ जाता है। तो आपको लास्ट मोमेंट पे क्विक रिवीजन जो है वो फोकस करना चाहिए, रेदर देन कलेक्टिंग सो मच ऑफ कंटेंट। जितना कंटेंट है आपको उसको ही आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्र एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट take home message for our juniors who are planning to appear in the June exam. So Ishada, once again many congratulations Thank on you. behalf of Thank our you. entire Miss team, Thank you. and we all wish for your successful future and your grand success in coming time. God bless